Hello, everyone. Welcome back. Today, we're going to talk about the next poem by Langston Hughes, which is Harlem. We've already spoken about who Langston Hughes was. Let's quickly dive into the poem. I'm going to recite it first. Harlem. You all know what place Harlem is and what happened in Harlem, right? Yeah. This is Harlem. Okay. This is where the Renaissance, Harlem Renaissance took place. It's in the upper Manhattan area, New York City. And हार्लेम रेनेसा एक अफ्रीकन अमेरिकन कल्चरल मूवमेंट था सिर्फ लिटरेचर का नहीं लिटरेचर ऑफ कोर्स इंक्लूडेड बट also music dance art fashion theater politics everything they wanted to revive uh, the culture of the African American people इसी को हम लोग न्यू नीग्रो मूवमेंट भी कहते हैं विच इज नेम्ड आफ्टर द न्यू नीग्रो जो एक एंथोलॉजी थी जो एलेन लॉक ने एडिट किया था ठीक है you can go and read out if you don't know what Harlem Renaissance was. What happens to a dream deferred? Does it dry up like a raisin in the sun, or fester like a sore and then run? Does it stink like rotten meat, or crust and sugar over like a syrupy sweet? Maybe it just sags like a heavy load, or does it explode? इतनी सी ही पोम है यू ऑल नो कि लैंगस्टन ह्यूग्स as we discussed छोटी छोटी इन्होंने पोम्स लिखी हैं बट they've been very powerful in that manner right एक बार और इसको हम रीड करते हैं ठीक है Harlem by Langston Hughes. What happens to a dream deferred? Does it dry up like a raisin in the sun, or fester like a sore and then run? Does it stink like rotten meat, or crust and sugar over like a syrupy sweet? Maybe it just sags like a heavy load, or does it explode? So, what is Langston Hughes trying to say here? The entire theme is that what becomes of frustrated black dreams in racist America. So, he says, what happens to a dream deferred? He asks, what occurs when a person's dreams, especially the dream of equality, वो बार बार उसको डिनाई किया जाता है उसको पोस्टपोन किया जाता है ड्रीम डेफर्ड इज पोस्टपोनिंग समथिंग तो उसका क्या होता है फिर क्या वो ड्राई अप हो जाती है क्या वो खत्म हो जाती है कि अब बार बार जब उसको डेफर किया जा रहा है तो यू विल जस्ट स्टॉप आस्किंग फॉर इट दैट्स अ पॉसिबिलिटी सो डज इट ड्राई अप लाइक अ रेजन इन द सन इट्स अ सिमिली it suggests that something that was once fresh, a grape, it becomes dried out and it hardens due to the long exposure. So the dream loses vitality when left unfulfilled. Then, or fester like a sore. There's another possibility that he gives that the dream becomes infected. Fester like a sore. जैसे sore होता है ना आपको लग गई एक sore हो गया एक wound हो गया. So there's a possibility of it becoming infected, turning into emotional or social pain also. So, or fester like a sore and then run, the wound bursts and oozes, symbolizing how ignored injustice can worsen and spill over into visible suffering. Does it stink like rotten meat or crust and sugar over? So, again, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दी हैं अ डिकेइंग ड्रीम इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल जैसे कि एक रॉटन मीट से आपको स्मेल आती है सो दिस इंप्लाइज दैट prolonged frustration it corrupts society itself it becomes impossible to ignore or crust and sugar over like a syrupy sweet this is another option
The dream might dry on the surface, एक शुगरी सा crust बन जाता है ऊपर, like a syrupy sweet. Another simile which suggests it's a false sweetness, mask की तरह है, क्योंकि अंदर से वो अभी भी सड़ रहा है. Again, a deferred dream might seem harmless or forgotten on the outside, लेकिन अंदर से वो चीज बिल्डअप हो रही है, while remaining corrupted underneath. You understand? कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे इमोशंस इतने ज्यादा हम लोग भर जाते हैं, हम लोग बोल नहीं पाते. कुछ लोग होते हैं बोल देते हैं फटाक से, कुछ लोग होते हैं बोल नहीं पाते. वो भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है, एंड अल्टीमेटली एक दिन आता है जब वो एक्सप्लोड होने की पॉसिबिलिटी होती है. सो और क्रस्ट एंड शुगर ओवर लाइक अ सिरपी स्वीट, मे बी इट जस्ट सैग्स लाइक अ हेवी लोड. अब टोन शिफ्ट हो गई है. सो इंस्टेड ऑफ रॉटिंग एंड इन्फेक्टिंग, मे बी इट जस्ट ग्रोज वेरी हैवी, एंड अब वो बर्डन लगने लगता है. यार हो तो रहा नहीं है कुछ, लेट्स जस्ट लीव इट. The deferred dream hangs on the shoulders of the individuals or communities, weighing them down emotionally, socially, and psychologically. And the last line, or does it explode? Finally, the abrupt possibility, unfulfilled dreams may erupt in violent rebellion also. The poem ends with the threat of social explosion. हो सकता है riots हो जाएं, revolts, uprising, when injustice becomes unbearable. So this line is both a warning and a prophecy of the consequences of prolonged racial oppression. Sorry. ठीक है, तो ये आपका, दिस इज द पोम, दैट्स इट. छोटी सी है, प्लीज मोर अबाउट इट. जैसे कि इसका सिंबलिज्म, बहुत टाइम नहीं लगेगा, जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट वंस अगेन एंड यू आर गुड टू गो. थैंक यू.